पीपीटी शो की है, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ओके, यस, लेट्स मूव, जिसमें हमारे पास अब इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ द मीनिंग आर यू, व्हाट इज़ द हाउ टू डिस्क्राइब द ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स and their link, their relations, their associations. Let's see. Introduces e-business and e-commerce and their relevance to business and consumers. It clarifies e-business terms and concepts such as online business, revenue and technology models by reviewing alternative applications through activities and cases एंड केस स्टडीज। ओके, मीन टू से कि ये आपका जो यूनिट है या आपका ये जो कंप्लीट एक कोर्स है, हाउ मेनी कंटेंट्स दे विल बी available, or they will be enriched in this course, right? तो इंट्रोड्यूस ये वाला जो हमारा बिजनेस है, इसमें हमारा जो लिंक है, रिलेशंस है, वो हमारा, बिकॉज हम अगर बिजनेस से भी देखें तो बिजनेस एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट्स, लाइक इवेंट्स मीन के मनी से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं क्योंकि आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो मनी ट्रांजेक्शन्स, इवेंट तो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, सम इवेंट्स, अगर इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस का बैकग्राउंड के हवाले से बता रही थी। बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिफोर इकोनॉमिक जो है वो हमारी इवेंट है। इवेंट हैव डिफरेंट टाइप्स, बट दैट इवेंट आर इन्वॉल्व इन द मनी, regarding the money, where you will perform, you will make a plan for financing, for money, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ मनी से रिलेटेड होगी, ठीक है, एंड दैट एम टू बाइंग एंड सेलिंग, फॉर एम टू प्रोड्यूसिंग, फॉर फर्दर अर्निंग पर्पस। सो ये मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हमारे ऐसे इवेंट्स हैं जो मनी से रिलेटेड हैं, तो हम वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। और इकोनॉमिक में फिर हम टाइप सच एज लेते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास इकोनॉमिक, और फर्दर हमारे पास बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। और बिजनेस में हमारी सच एज एक्टिविटीज़ जो प्योर जो है, जिसका मेन फोकस होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, इसका सबसे पहला जो मकसद होता है, इट्स फर्स्ट मोटिव इज अर्न टू मनी। ओके, ये एक ट्रेडिशनल था, हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप थी, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये डिफरेंट लेवल के प्रोस्पेक्टिव से हमारे बिजनेस जो हैं आर रनिंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू saw them कि इन बिजनेस को which type of hurdles they were facing, okay, which type of the hurdles they were facing, कि इनके बिजनेस एक्सप्लोर नहीं हुए, इनके बिजनेस में which type of hurdles are involved them, तो कंज्यूमर की एक्सेस नहीं हो रही, और सप्लायर जो है वो चीज़ें उस लिहाज से कंज्यूमर तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, मीन के जिसको हम हर्डल्स कहते हैं। मोर हर्डल्स वर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि बिजनेस जो है उस टाइम आपका इनरिच हो सकता है जब उसकी डायरेक्ट एसोसिएशन कंज्यूमर हु इज़ द कंज्यूमर इज a persons who buy the goods for his use, for his or her use. Okay, customer is not a compulsory is a consumer जो है ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर ज़रूरी नहीं कि वो कंज्यूमर हो, बट कंज्यूमर जो है वो कस्टमर ही है। ओके, कस्टमर जो है इट्स नॉट अ कंपल्सरी वो कंज्यूमर हो। कस्टमर जो है मैनी पर्पस, लाइक आपने अपनी चीज़ बाय की और फर्दर जो है उसको सेल कर दी, तो आप क्या है, आप एक सप्लायर का काम कर रहे हैं। कस्टमर के तौर पर तो आपने बाय की थी, बट जब आप बाय करने जाते हैं और खुद ही यूज़ की, तो इट्स मीन कि आप कंज्यूमर भी हैं।
तो अब आप बिजनेस का एक गैप था ड्यूरिंग अ बिजनेस प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा गैप था, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूसर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था जो वो करना चाहता था, या वो जो कंज्यूमर की डिमांड थी। सो ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी देयर गैप वाज फुलफिल्ड। ऐसे ही है। तो इस गैप को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेस, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये गैप जो है ये फुलफिल हो गया। और आप किसी भी एक रूरल एरियाज में बैठे हैं, तो और यू वांट टू बाय द गुड्स फ्रॉम अर्बन और या फ्रॉम द एन अदर कंट्री, नाउ इज अ पॉसिबल। Now is a possible you will buy anything else from anywhere from any time. Okay, so within the 24 hours all the services are available at your door, due to e-business। तो ई बिजनेस जो है ये एक छोटी सी एक जिसको हम हिस्टोरिकली बैकग्राउंड है कि हमारे बहुत सारी जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व भी हुए। और जहाँ रिजॉल्व हुए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर आल्सो क्रिएटेड। क्रिएटेड मीन कि जहाँ ये एक चेन थी कि गुड्स, क्योंकि ऑलमोस्ट यू नो जो है एवरीथिंग हैज़ अ ड्यूल एस्पेक्ट। ऐसे ये राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड लेफ्ट। तो जहाँ पॉजिटिव थिंग्स होती हैं आर आल्सो अफेक्टेड एंड नेगेटिव, आर आल्सो अफेक्टेड पॉजिटिव आर yet advantages and are as well as डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो है, कंज्यूमर घर बैठे वो चीज़ें ऑर्डर कर सकता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्किंग, तो वो अनएम्प्लॉयड का फेसेस जो है वो फेस कर रहे हैं। हाउ मीन जैसे मिडल मैन था या एक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन होती थी, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन वर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। यस। नहीं नहीं, आवाज थोड़ा सा। नहीं, डोंट वरी। जो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड शो हो रही है ना, उसी का थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। ठीक है। अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन तो मैंने शो की हुई है बच्चे। जी, ये इंट्रोड्यूसेस e-business and e-commerce and their relevance to business and consumer. It clarifies e-business terms and concepts such as online business, revenue and technology models by reviewing alternative applications through activities, case studies. Okay. Yes, introduction to e-business and e-commerce, the impact of the electronic communications on traditional basis. What is the difference between e-commerce and e-business? E-business opportunities, that point will be discussed. Okay, e-business opportunities, business adoptions of a digital technology for e-commerce,
e-business risk and barriers to business adoption, management responses to e-commerce and e-business. After this unit, you will be able to, yes, define learning outcomes, define the meaning and scope of a e-business and e-commerce and their different elements. Summarize the main reasons for adoptions of a e-commerce and e-business and barrier that may restrict adoption. Outline the ongoing business challenges of the managing e-business and e-commerce in an organizations. Yes, management issues. How do we explain the scope and implications of e-business and e-commerce to staff? What is the full range of benefits of introducing e-business and what are the risks? How do we evaluate our current business capabilities? Yes, now we are starting. Okay, ये फर्स्ट जो है ये आपका लर्निंग आउटकम्स है, आपकी कंटेंट्स हैं, राइट? आपकी ऑडियंस कौन होगी? Organizations have now been applying technology based on the internet, World Wide Web, World Wide Web, and wireless communications to transform their business for over 15 years since the creations of the first website by Sir Tim Berners-Lee in 1991. इसमें मोस्टली जो है ये जिसको हम कहते हैं ये इसमें प्रैक्टिकली भी आएगा, इसके अंदर प्रैक्टिकली भी चीज़ें आएंगी. Deploying these technologies has offered many opportunities for innovative e-business to be created based on new approaches to business. Like our next जो आपका टेबल 1.1 है, highlights some of the best known example as an activity. You can explore some of the reasons for success of these e-business. Yes, you can see on your screen your company site category of innovation and business model founded. Okay, 1904 में Amazon retailer था. Okay, who is a wholesaler and retailer? I think so you know who is a retailer or है. स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो रही बच्चे? अब आपके पास स्क्रीन शो हो रही है बच्चे? ओके ओके, थैंक यू जी. रिटेलर एंड होलसेलर. होलसेलर और रिटेलर का आप लोगों में बहुत अंदाज़ा है. रिटेलर जिसको हमने कहा कहते हैं कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है, जो इंडिविजुअल बेस्ड चीज़ें बेस करता है, या एक जिसको हम कहते हैं कम तादाद में बेचने वाला है, ठीक है. होलसेलर है जो बल्क तादाद में सेल करता है और प्रोड्यूसर से या प्रोडक्शन एरिया से उठाता है. अमेजॉन रिटेलर 1995 में मार्च yahoo.com directory and portal was introduced. 95 September में e-buy online auctions were introduced. 95 December Alta Vista search engine. Hotmail.com web-based email viral marketing using email signatures to promote service. Purchased by Microsoft in 1997. 98 goto.com pay per link search marketing. Overture to 2001 purchased by Yahoo in 2003. ये डिफरेंट जो है, अब देखिए हम मेरे पास तो हाइड नहीं हो रही, डायरेक्ट खड़ी है. अच्छा चले, मैं हो सकता है मैं आपकी तरफ आती हूँ टेक्स्ट में तो मे भी ऐसा हो रहा होगा, मे भी. ठीक है.
जी, 99 में आप देख लें, ठीक है, ब्लॉग पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म परचेज़्ड बाय गूगल, जो गूगल इन 2003, गूगल इज़ जिसको हम कहते हैं एक किंग है नेटवर्किंग का, ठीक है। 1999 अलीबाबा was introduced B2B marketplace with 1.7 billion IPO on Hong Kong Stock Exchange in 2007. See case in chapter number 2. ओके, मीन के जहां आपने इसकी जो हिस्ट्री है 94 में अमेजॉन रिटेलर से स्टार्ट हुई और 99 ऑनवर्ड जो है, ठीक है, माई स्पेस .com, इसमें मोस्टली ऐसी भी चीज़ें, ऐसी भी साइट होगी, हो सकता है कि आप में से बहुत अच्छे भी बच्चे हैं, अच्छे ये नहीं है कि सारे बच्चे अच्छे, मीन के बहुत ज़्यादा फेमिलियर आईटी से, ठीक है, जैसे वो हुसैन है, कौन सा इसमें बच्चा है जिसने कहा वो आईटी की दुनिया में वो अपना नाम रोशन करेगा, विद द बेस्ट विशेस विद हिम। तो ऑल द बेस्ट। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये एक जिसको हम कहते हैं ना, एक इनर सी जो होती हैं, ठीक है, चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी चीज़ को उन पैशन होना चाहिए, तो जिस चीज़ का पैशन होता है तो वो जैसा भी हो तो वो कर गुजरता है, ऐसे ही है। फॉर्मली ई यूनिवर्स परचेज बाय न्यूज़ कॉर्प इन 2005, विकिपीडिया लास्ट फॉर्म यूके बेस्ड इंटरनेट रेडियो एंड म्यूजिक कम्युनिटी वेबसाइट फाउंडेड इन 2002 ऑन 30th May 2007। अब देखिए ये डिफरेंट जो है वो इन्होंने बताया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है, जैसे आपके ये फेसबुक है, यूट्यूब है, अलीबाबा है, स्काइप है, ठीक है, या विकिपीडिया है, या आप इसमें आपने पीछे जो है अलीबाबा हो गया, गूगल है, go to.com है, हॉटमेल है, तो ये डिफरेंट वर्जन जो हैं, ये साथ साथ जो पाकिस्तान में या यहाँ जो है जो आम उसमें वो हैं फेमस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कुछ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये सारे जो हैं वो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें भूल भी जाएंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं भूलेंगी। जी, for the author, e-business and e-commerce is an exciting area to be involved with since many new opportunities and challenges arise yearly, monthly, and even daily. That's great. Innovation is a given with the continuous introduction of a new technology, new business models, and new communications approaches. Almost कि some was saying that कि जो हमारी इनोवेशन है या थिंग्स या फिर चैलेंजेस हैं या चीज़ों की ये जो जिस तरीके से इन्होंने कहा ना, सिंस मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस अराइजेस ईयरली, पहले तो साल साल होते थे चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़ और ये चीज़ें चेंज होती रहती थी, फिर मंथली पे आ गया, फिर दिनों पे आ गई, बट नाउ इन इवन सेकेंड ईच एंड एवरीथिंग दे आर changing their past, their previous existence, their previous versions। तो वो बात जो है जो पहले सालों पे थी, ठीक है, अब वो किस पे आ गई, अब वो मिनटों पे आ गई, ठीक है, अब वो मिनटों पे आ गई है, अब वो सेकंड पे आ रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चेंज हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, with the help of different app, with the help of network world wide web। ये जो वेब है ना, तो इस वेब ने ही मॉडल विलेज बनाया। मॉडल विलेज मीन के जो कहते हैं ना, वर्ल्ड जो है हमारी दुनिया लाइक अ विलेज, लाइक अ
विलेज, तो इस ग्लोबल विलेज की वजह से हमारा ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू। बस अल्लाह की तरफ से हम कहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विदाउट ओनली टू थिंग्स, कि हम एक इंसान को ज़िंदा नहीं कर सकते और ना ही हम जो है, जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। वैसे तो हर चीज़ उसके हाथ में ही है, लेकिन अभी जो है इस टेक्नोलॉजी और इस चीज़ ने सांस लेना और देना, ये सिर्फ, इसके अलावा बाकी ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सो फॉर एग्जांपल, गूगल इनोवेट्स relentlessly. It service has developed a long way since 1998. Figures ये है, with the billion of pages now indexed, and other services can such as a webmail, pay per click, adverter, analytical, and a social network, all part of its offering. You can see on here this screen. Yes, Google. You can see on this screen. Okay. Google search engine, window, Internet Explorer, yes, IP address, Google search engine. Okay, or copyright 1997. E-business innovations and opportunities. Since Google was launched in 98, which e-business startups have transformed the way we work, live, and play? How was Google innovated in search and its business table? That's a good question. जैसे यहाँ मैंने वही live and play. Impact of the internet on business. Chairman of Intel, one of the early adopter of e-commerce, has made a meteorological analogy with the internet. He says, "Is the internet is the internet a typhoon force, a 10 times force, or is it a bit of wind? Or is it a force that fundamentally alerts our business?" E-business opportunity: reach over 1 billion users globally, connect to millions of product richness, detailed product informations on 20 billion pages indexed by Google, blogs, videos, feeds, personalized messages for users, affiliations, partnerships are key in the network economy. Internet risk: what can go wrong with a transactional site? False order made by customer, yes. Incorrectly input order, insufficient security. People are usually people are usually hesitate to give out banking detail over the internet. After sales services may be hard to organize depending on the store location and postage. ये तो एक आफ्टर सेल सर्विसेज, ये तो उनकी तरफ से ही हर्डल्स हैं। बट जहाँ बात आ जाती है इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज और या इनकरेक्टली इनपुट ऑर्डर मीन कि अगर कस्टमर अपना ऑर्डर इनपुट कर देता है तो ठीक, बट जब वो व्हेन कस्टमर विल रिसीव the order that was demanded, ठीक है, तो जो हमने ऑर्डर उनको दिया था और जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो वो ऑर्डर मैच नहीं हो रहा और ऑलमोस्ट इज अ बिग मिस्टेक। तो हम कहते हैं ना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जो बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स में जो है हम कह सकते हैं जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये भी एक मोस्ट ऑफ द थिंग्स या वीक, अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो जिसमें वीक हमारी आ जाती हैं, वीकनेस होती है, तो ये भी हमारी एक वीक पॉइंट है कि जो ऑर्डर हम करते हैं वो ऑर्डर जो है, बच्चे मैंने फुल की हुई स्क्रीन,
What is the e-commerce and e-business? You are attending a role in the e-business team of a global bank. To anticipate, you may be asked the distinctions between a e-commerce and e-business. E-commerce, electronic commerce, all electronically mediated information exchange between an organization and its external stakeholder. Kolkata and Washington refer to a range of a different perspective of a e-commerce. A communication perspective, the delivery of information, product or services or payment by electronic means. A business process perspective, the applications of a technology toward the automations of a business transactions and workflows. Services perspective, enabling cost cutting at the same time as increasing the speed and quality of a service delivery. An online perspective, ये डिफरेंट जो है व्हाट इज द ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, ये डिफरेंट अगर ई कॉमर्स हम इसमें पॉजिटिवली हम ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं, कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव से, सर्विसेज पर्सपेक्टिव से और ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से। ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिएटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज both within an organization and with external stakeholders supporting the range of the business process. Buy-side e-commerce and sell-side e-commerce. Buy-side e-commerce. E-commerce transactions between a purchasing organization and its suppliers. Buy. And sell-side e-commerce transactions between a supplier organization and its customer. Mean ke buy and selling. When they will buy, how many parties they will face, and when they will sell them, how many parties they will face. Yes, e-business. You can see on your screen buy side e-commerce and sell side e-commerce. Okay, internet and extranet and extranet. Okay, internet is the process. ये जिसको हम कहते हैं ना, ये इनपुट है और ये ट्रांसफॉर्म्स है, और आफ्टर जो है आप दोबारा जो प्रोसेस करते हैं आउटपुट, और आफ्टर आप खुद भी फिर उन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कि सप्लायर है, सप्लायर एंड सप्लायर्स, organizational process, write this, and functional unit, intermediaries. आपके पास how many intermediaries are involved, like जिसको intermediate persons का नाम हम देते होते थे। okay, customers and customer consumers. okay, distinctions between buy side and sell side e-commerce. E-commerce and e-business. Electronic commerce has some degrees of overlap with electronic business. E-commerce and e-business. Electronic commerce is broadly equivalent to electronic business. Electronic commerce is a subset of electronic business. Yes. There is a relatively small overlap between e-commerce and e-business. We can reject, since the overlap between buy-side and sell-side e-commerce is a significant, seems to be more realistic, and indeed many commentators seems to consider e-business and e-commerce to be synonymous. It can be argued, however, that figures most realistic, since e-commerce does not refer to many of the transactions within a business, such as a processing, and because
ऑल द पर्सन्स जो है हम सोचें कि तमाम के कंसेप्ट पॉजिटिव होंगे और तमाम के कंसेप्ट जो है वो विद द फेवर विद ई बिजनेस के ई बिजनेस इज अ ग्रेटर और ये मोर दे हैव टू more scope as compared to e-commerce or ये e-commerce they do have a more scope as compared to business. No, never. कभी भी हम all the persons जो हैं they should be on one page. Impossible. तो जहाँ नेगेटिव कंसेप्ट होते हैं वहाँ पॉजिटिव भी होते हैं और जहाँ पॉजिटिव होते हैं तो ऑलमोस्ट वी face the negative their concept. E-commerce can best be conceived of as a subset of the e-business, and this is the perspective we will use in this book. Since the interpretation in you can see in the figure is equally valid. What is the important within any given company is that a managers involved with the implementations of the e-commerce or e-business are agreed on the scope of what they are trying to achieve. Marketing, internet, extranet. मार्केटिंग में परचेसिंग ओके। और यहाँ से आप दोनों को देखें तो आपके पास इंटरनेट है और इंटरनेट कौन हु इज़ द अथॉरिटी और हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ओके। इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट सो इंटरनेट जो हमारी नेटवर्किंग है ओके। द वर्ल्ड है आफ्टर कंपनी ओनली एंड द वर्ल्ड suppliers customer and collaborator suppliers customer and collaborator relationship between internet extranet and internet internet how to define the internet and extranet a private network within a single company using internet standards to enable employees to access and share information using web publishing technology okay a private network okay and imply to access and share information using web publishing technology extranet a services provided through internet and web technology delivered by extending an internet beyond a company to customer supplier and collaborator meaning no limitations on who will take the services, who will perform their duties. It is information is restricted to imply inside an organization. This is an internet as in shown. In a survey, 2,275 managers responsible for an internet features. The main benefit mentioned by managers was improved information sharing, enhanced communication and information sharing, increased consistency of information, increased accuracy of information, reduced or eliminating processing and easier. It is a apparent एग्जाम्पल है आपके बैंक फर्स्ट ट्रैक यू कैन सी। अब आप इसको देख लीजिएगा। यस आप इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कहें ठीक है नेसेसरीज इसको कहें ठीक है। तो ये आपके पास जो ये वो हैं जो हमारी कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स ई कॉमर्स है ठीक है और ये एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसके थ्रू हम मोस्ट ऑफ द पर्सनस जो हैं दे आर डीलिंग थ्रू दिस के सप्लायर ऑफ कंटेंट सर्विसेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए यहाँ कंज्यूमर और या सिटीजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ओके। इन्होंने तो बहुत खूबसूरत सा एक चार्ट बना के आपके सामने कॉलम दे दिया है 3x3 का 3x3 का कॉलम बहुत खूबसूरती से दिया है कि कंज्यूमर और सिटीजन को जब हम सीसी को मिला देते हैं
ठीक है, और जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व कर देते हैं और जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ओके, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, आप कहते हैं ऑलिक्स पे डाल दें, चीज़ें पुरानी जो है बेच देते हैं, नई बेच देते हैं, ली है पसंद नहीं आई बेच दें। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ई बाय, peer to peer Skype, blogs and communities, product recommendations, social network, MySpace, Bebo. Consumer to business, Priceline, consumer feedback, communities are a campaign. Consumer to government, feedback to government through pressure group are individual sites. Business to consumer, B2C, transactional, Amazon, डायरेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, यूनिलीवर, मीडिया ऑनर, न्यूज और कंपैरिजन इंटरमीडिएटरी, कैलको, प्राइस रनर। बिजनेस टू बिजनेस है, यूरो ऑफिस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, बीपी, मीडिया ऑन्ड, बिजनेस पब्लिकेशंस, बी2बी मार्केट प्लेस। Business to government, feedback to government, business and non-governmental organizational government, national government transactions like a tax, inland revenue, national government informations टू कंज्यूमर। इधर तो उन्होंने बहुत थोड़े कम बताए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, लाइक जैसे आप टैक्स देते हैं, आप जो है स्कूलों की फीस जमा करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जमा करवाते हैं, एनटीएस की फ़ीस जमा करवाते हैं, तो ये क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है। गवर्नमेंट टू वो कहें, नेशन कहें, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, government service and transactions, legal regulations, government to government, inter-government services, exchange of information। जब आप गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होगी तो फिर आगे जो फर्दर जो ट्रांजेक्शन्स आपकी तरफ से गवर्नमेंट को लेगी, फिर वो वाली पॉलिसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। Additional activity driver and barriers to adoption. You are in a team of the advisor at a local business link. Think a local government agency encouraging adoption of e-commerce. Driver to adoptions of the sell side e-commerce by business and how you can reinforce these by marketing benefits. Barrier to adoptions of the sell side e-commerce by business and how you can reinforce these by stressing benefits. Efficiency and competitiveness driver, cost comparative efficiency driver, increasing speed with which supplies can be obtained, increasing speed with which goods can be dispatched, reduced sales and purchasing cost, reduced operating cost. Competitiveness driver, customer demand, improving the range and quality of the services offered. Almost जो है quality they will be improved when डायरेक्ट रिलेशंस आया, जब हमारा कस्टमर जो है, जो सॉरी जो कंज्यूमर है जो यूज़ कर रहा है, उसकी जब डायरेक्ट एक्सेस होगी तो कहाँ तक, मैन्युफैक्चरर तक, तो वो ऑटोमेटिकली दे विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन what they want, okay, or what they want the changes in their existing product, what they want new changes in the coming weathers, in the coming fashions। तो ये चीज़ें जो हैं जो सप्लायर तक जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी उनकी चेंजेस, उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ऑलमोस्ट दे विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। Avoid losing marketing shares to the business already using e-commerce. Usage of different e-business services in European countries. Barriers to development of online technology. Almost where do you do have a positive impact, where do you have a positive point, as well as you will face the negative. DTH study evaluated some of the barriers to B2B e-commerce. You can see that reasons of the cost were the most important factors. This suggests the importance of managers assessing e-business to develop a cost
benefit analysis that consider both the initial investment cost, the ongoing cost that form the total cost of ownership. TCS, the total cost of ownership against the value created from the tangible and intangible benefit. Simple stage model for buy side and sell side. यस, ये स्टेजेस हैं। अब आपने इन स्टेजेस को अच्छे तरीके से देख लेना है। वेरिएशंस एंड डिफरेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज बाय जेंडर। जी, typically benefits of online services are summarized by the 6C. Good. Simple, a simple mnemonic to show different types of a customer value. Contents. In the mid 90s, it was often said the content is king. Well, relevant, rich content is still king. This means more detailed, in-depth information to support the buying process for transactional or your relationship building sites or your branded experiences to encourage product usage from FMCG brands. Customization. In this case, mass customization of a content, whether received as website pages such as Amazon recommended or your email alerts and commonly known as a personalization community. The internet laboratories. आप लोगों को स्लाइड शो नहीं हो रही थी? मैंने तो बच्चे चेंज किए जा रही थी। अब देखें, अब मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को शो हो रही है? जी। Typically, benefits of online services are summarized by the 6C. Simple mnemonic to show different types of a customer value. Contents, customization, community, convenience, choice, cost reductions, and next and last slides barriers to consumer internet adoptions. जी, आप बताएं, अब जब मैंने ये चेंज किए तो अब आपको शो हो रही है स्लाइड्स? पहले भी मैंने की हुई थी। जब आप लोगों ने मुझे कहा कि इसको आप एक्सटेंड करें तो मैंने एक्सटेंड की हुई थी और मूव कर रही थी, बट वो क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। ठीक है, जी जी जी, अब लास्ट स्लाइड्स है। जी, स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ और साथ में आपको आउटलाइन भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ये आज वाला जो टॉपिक था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये बाकी वाले टॉपिक से थोड़ा सा हटके होगा, सॉरी बाकी कोर्सेज से।
आज था हमारा इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। इसमें डिफरेंट जो है आपने इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, e-business opportunities, business adoption and digital, e-business risk and barriers and management responses, और लर्निंग इसकी क्या हुई। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपने इसमें देखने हैं। सिक्स इसमें जो सीज हैं ये इट्स इम्पॉर्टेंट। सिक्स सीज जो हैं ये टिपिकल बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, ये जो सिक्स सी हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट है।